Hello, dear students. How are you all doing? I welcome you to today's class. As you know, we have started the new chapter 4 in geography, climate, and certain points we have discussed. Of course, this is a very important chapter. It is not only from class 9 point of view, but from GK point of view also. Many things in this chapter we will be discussing, which is important. Because what happens is the general awareness questions or the general knowledge questions that are put up from the chapter, it includes many questions from this chapter. Got it? Climate say, when you further go for any competitions, the competitive examinations that are there, in those competitive examinations, you will be having questions from this chapter. So that in itself makes this chapter very important, dear children, as the certain points, certain topics that are there, whole lot of importance. Got it, children? That's why I said ki while we will be proceeding with this chapter, you have to see that you are completing some portions with lot of sincerity. आपके लिए आज के लिए नहीं, but in future when you will be dealing in with this chapter with certain topics, you will be feeling कि अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था. Okay, I am reminding you, I am reiterating that whatever points we will be doing in this chapter, please check it out that you do it properly. Okay, so last class, in the last video, what we have discussed regarding climate. Okay, we have majorly that we have discussed is the difference between climate and weather. Okay, children, difference between climate and weather. Now you have to understand that climate, the discussions that we have done, already the discussions that we have done, climate is the temperature of a particular place for a period of, for a continuous period of long time. ठीक है? Long period, the phenomena that is discussed, the phenomena that we do is climate, and weather conditions keep on changing on a daily basis. ठीक है? ये तो आपने समझ लिया होगा. How do we call it as a cool day, a sunny day, a windy day? How do we use these concepts? Further we will be discussing in this chapter. आगे आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता चलेंगी. And how we are dividing the whole season, whole year into seasons, a different season. The season changes that happens, the summer season, the winter season, and all these season changes, the mawsam that changes, it is very, very, it's very visible, it is very well seen. Got it? तो इन सारी चीजों को हमको अच्छे से डिस्कस करना है. We need to discuss it very properly. Now what happens is that certain places, एक चीज और phenomena है. एक तो all over the year, the season and the climate that changes, the season changes that happen all through the year. One, we will be discussing that. Then we will be discussing the another phenomena that in a day also, the day temperature is very high and the night temperature gets very low. एक ही जगह पे. Okay. So one point that we have discussed, इसमें हमने थार desert के बारे में बात की थी, where the morning temperature, the day temperature goes as high as 50 degrees Celsius, and the night temperature comes down to around 10 to 15 degrees Celsius. So extreme hot and extreme cold. That is also a kind of weather conditions that prevail at certain places. Okay. Then we have also talked about the temperature change. In India only, in the northern region and in the southern region. Southern region we have a oceanic climate.
the climate that remains the same all through the year. All through the year, the climate that remains the same is because of the nearness to the sea. आप केरला देख लो, all the places which is adjoining the sea, वहां पे temperature changes doesn't fluctuate very frequently. Got it? तो we need to understand that कि temperature change बहुत frequently नहीं हो रहा है. How it is not happening and what are the major factors, major criteria behind that, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. Another thing that is there is कि some places, all the seaside places that are there, why it is happening that the same kind of a temperature prevails in the morning and at night. Both the times we have the same temperature. And Thar Desert में ऐसा क्यों है? Another thing that we are going to discuss today, important one that we are going to discuss today is precipitation. Precipitation. Got it? Precipitation, इसमें there are lot of variations. There are variations not only in the form and types of precipitation, the rainfall that is happening, it is also the amount and the seasonal distribution. Okay, precipitation means rainfall that is happening. Of course, the water vapor in the air, that in the atmosphere that is there, the amount that is there, and the seasonal distribution of this precipitation. कब कहाँ कितनी snowfall हो रही है, how much of snowfall is happening, how much of rain is happening, we need to understand that. Okay, and it rains over the rest of the country. पूरे देश में जो है rainy season रहता है. कैसे रहता है? Annual precipitation जो है, जैसे कि precipitation जो rainfall occurs in Meghalaya, please understand, Meghalaya में the rainfall is very high. कितना? It is as high as 400 centimeter. इतना रेनफॉल होता है मेघालय में. एंड ठीक इसका ऑपोजिट, अभी ये देखो रेनफॉल वेरिएशन, द प्रेसिपिटेशन वेरिएशन दैट इज देयर एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. ठीक है, 400 सेंटीमीटर इट इज देयर इन मेघालय एंड लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख में. इन लद्दाख इट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर. गॉट इट? So you can understand how this temperature variation happens. Annual precipitation, most parts of the country, ज़्यादातर पूरे देश में जो है, they receive rainfall from June to September. जहां भी मतलब in our country, when we are talking about India में जब हम बारिश की बात कर रहे हैं, what is the major season in which this rain is happening? It is clearly happening in the whole of India from June to September. Abhi children, I would like to give you the example that is existing, that is persisting now. अभी क्या है? Rains हो रहे हैं. You can see the heavy rains, and it is such a sorry state where I would like to mention that some of the states in India are witnessing big flood because of this rains, extreme rains. रेन्स की प्रॉब्लम नहीं है, हद से ज्यादा. देखो बहुत कम रेन्स होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज देन एग्रीकल्चर इज डिस्ट्रॉयड. एग्रीकल्चर फेसेस अ प्रॉब्लम व्हेन लेस ऑफ रेन इज देयर. एक्सट्रीम ऑफ रेन में क्या होता है? फ्लड इज देयर. तो जून टू सितंबर इज द सीजन विच विटनेसेस द रेनफॉल विच इज नोन फॉर द प्रेसिपिटेशन. गॉट इट? लेकिन some parts are there, जून टू सितंबर ऑल ओवर इंडिया में बारिश हो रही है, जैसे कि अभी हो रही है. as we are seeing, it is the month of August. और कितनी रेनफॉल हो रही है. लेकिन some parts like Tamil Nadu is there. Got it? Tamil Nadu में coast get a large portion of its rain during October and November. तमिलनाडु में बारिश अभी तो इस बार तो हर जगह ही बारिश हो रही है, बट द सीजन फॉर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. गॉट इट? तमिलनाडु में द रेनफॉल सीजन इज
In Tamil Nadu, rainfall is from October, November. In the months of October, November. Got it? So you can understand. October, November, this rainfall is happening in the region of Tamil Nadu. So coastal areas experience less contrast in temperature conditions. The temperature conditions that are prevailing means extreme temperatures, हद से ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा बरसात. This doesn't happen in the coastal region. The way it happens in the regions away from coastal areas. Got it? Seasonal contrast that is there are more in the interior of the country. Interior means which is away from the coastal region. Got it? Coastal region तो है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा seasonal changes, weather changes doesn't happen on a very large scale. बहुत ज्यादा नहीं होता है. Extreme climates we witness. कहाँ पे we witness? We witness in the interior of the country, means the places which are away from the coastal region. Okay. Then decrease in rainfall is generally from east to west. Okay. अभी यहाँ पे I will again make a very rough kind of a map. As I have already told you, ki children, I am not very good at making maps. Okay, so I am just making a rough map where you will find this is there. थोड़ा ज़्यादा ही rough हो गया है. इसमें northern region that you are seeing, rainfall that is happening. Here it is there. Then you are here. Going here and then coming here and then here. इसमें this is east and this is west. So rainfall, what happens? There is variations from east to west. East to west में generally we find that there are lot of variations in the rainfall. इस तरफ हद से ज्यादा बारिश होती है, लॉट ऑफ, बिकॉज यू नो पहले तो द मैक्सिमम रेन विटनेसिंग प्लेस, आई होप यू नो, जीके पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इम्पोर्टेंट. सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? सो इट वाज चेरापूंजी. नाउ इट्स नॉट चेरापूंजी, नाउ इट्स मौसिन राम. ठीक है, सो मौसिन राम इज इन दिस साइड ईस्ट में. वहां पे सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, हमेशा बारिश होती रहती है. तो वैरायटी ऑफ लाइव्स आर देयर इन द पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, खाना जो वो खा रहे हैं, द क्लोथ दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव, जिस तरह के घरों में रह रहे हैं. ऑल दिस सीजनल चेंजेस, द क्लाइमेटिक चेंजेस दैट आर देयर हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल. गॉट इट? And just opposite, देखो इस तरफ in the eastern side we have such high rainfall happening and in the western side we have such low rainfall happening. Got it? तो अब इसके वजह से, just now that I was talking about the social conditions, cultural conditions and the life of the people, तो इसमें we will be understanding कि राजस्थान के जो घर हैं, the houses in Rajasthan, they have thick walls and flat roofs. ठीक है, जो छत होती है ना वो बिल्कुल फ्लैट होती है. ओके, सीधी छत रहेगी आपको. बहुत मतलब यू वोंट फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक इफ द हाउस इज बिल्ड, अगर ये घर है तो ये फ्लैट है, लेकिन वॉल्स जो हैं, ये वॉल्स बहुत थिक होती हैं, इनकी दीवारें बहुत थिक होती हैं, एंड लेकिन छत जो है वो फ्लैट होता है. थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स एक्सट्रीम हीट के वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे, बिकॉज ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट गेट्स वेरी हॉट, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है डेजर्ट. गॉट इट? फॉर दैट रीजन व्हाट हैपेंस इज दैट द डेजर्ट एरिया में वॉल्स थिक बनानी पड़ती है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. मतलब अंदर के तरफ इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी कि सर्वाइवल वुड बी डिफिकल्ट. एंड रात में ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है. तो टू एस्केप फ्रॉम दिस extreme temperature, this kind of construction is done. On the other hand, what happens in the Goa region, Mangalore, the houses that are constructed, इस तरह के जो घर बन रहे हैं, इसमें they have the sloping roof. Got it?
रूफ इज स्लोपिंग. क्यों? यस, बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन एंड बारिश होती है. इट इज द कोस्टल एरिया, गोवा, मैंगलोर, ऑल दीज आर कोस्टल एरिया. ओके, सो फॉर दैट पर्पस देन व्हाट हैपेंस इज कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, यू विल बी फाइंडिंग इन योर बुक. जस्ट नाउ we will be seeing these questions that are there in your book and we will try to understand. Okay, now we will be understanding that climatic controls that are there. हाँ, climate कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट किस तरह से एक ही जगह पे एक ही तरीके का रहता है. We will be understanding about the climatic controls. How does the climatic phenomena changes? What are the major ways of the change in this climatic phenomena? क्यों होता है ये जो हम देखते हैं climate change that happens? How does it happen? तो आप समझो इस चीज को. There are certain things, latitude, altitude, got it? Latitude is there, altitude is there, pressure and wind system, pressure and wind system, got it? हवा जो चलती है उसका भी कारण होता है. The phenomena, the wind that changes, the wind flow that is there from the east to the west. High wind is blowing, low wind is there, तेज हवा, ज्यादा कम हवा, दबाव. अभी जैसे कि you can see there is lot of pressure in the atmosphere. क्यों इतना प्रेशर है? हम इतना स्वेट कर रहे हैं. We are sweating a lot, isn't it? We are sweating. कितनी बार ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लग रही है because of the moisture in the air. जो हमारे आसपास की हवा है ना, it is all filled with water vapor, droplets. Droplets of water vapor is there. Water is there. Droplets of water is there in the atmosphere. तो क्या होता है? प्रेशर ज्यादा हो जाता है. Atmospheric pressure is more. Okay? Distance from the sea. हम समुद्र से कितने दूर हैं, कितने पास हैं? So distance from the sea also matters. Got it? How far we are from the sea, that has an impact and that has an effect on the climatic conditions. Then we have the ocean currents. अभी try to understand children. हमारे यहाँ पे अगर हम ये बात करें, I hope you all are knowing it very well कि how much land is there and how much water is there all over the earth. तो land portion कितना है? We have, this is the question that I am giving you and we will be discussing it in the online session. Okay, this is a homework that I am giving you. Please find out how much land is there and how much sea is there. हमारे जो all over the earth, what portion is covered with water and what portion is covered with sea. Please find it out. तो अब सोचो, when such a vast area is covered by sea, तो you can understand covered by water, तो अब उसका कितना impact पड़ेगा हमारे on our climatic conditions. Climate is vastly affected because of this. So what is the major thing that is vastly affecting our conditions? Our conditions and our climatic conditions, our life conditions, how is it affected because of this large section of water that is there? Okay, ocean currents are there which are affecting the climatic conditions. Then relief features are there. Relief features. Got it? हाँ, relief features. Yes, physical division. Okay, कहाँ पे, how much water is there, नदी कहाँ बह रही है, पहाड़ कहाँ पे है, where we have the ocean, where we have
all these features of the globe. Got it? All these features that are existing on the globe, that has an impact on the lives of the people. So we have to understand how these conditions are affecting the weather conditions and the climatic conditions of the world. Abhi, this is the globe. This is the equator. This is the Tropic of Cancer and this is the Tropic of Capricorn. ये तो पता होगा आपको. You all have done it in class 6. Got it? तो the curvature of the earth, curve देख रहे हो, इस तरफ भी curve है ये. These are the curvical places. मुड़ा हुआ जो है, this kind of a structure that is there, the curvature that is there, it has an impact on the weather conditions of the earth. Amount of solar energy, सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, solar energy, this is varying according to the latitude. Latitude, of course, the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, ठीक है, half of the country is lying in the Tropic of Cancer. So India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. Latitude, ठीक है, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. उसके ऊपर जाएंगे तो और क्या मिलेगा? Poles. We will be getting poles, North Pole and South Pole. So latitude is affecting the climate. Air temperature generally decreases. Air temperature generally decreases from equator towards the pole. Equator पे सबसे ज़्यादा, because you know solar energy ना, sun's direct rays are falling on the equator. So when the direct sun rays are falling on the equator, obviously it would be extremely hot there. And sun rays are not directly falling. Poles पे तो hardly sun rays पहुंच पाती है. तो it हमेशा बर्फ जमी होती है वहां पे. Got it? So you can understand that from equator to the poles, the latitude differences are there, which are affecting the climatic conditions. Then we have the altitudes, higher altitudes, height. ऊपर, जितना ऊपर जाएंगे, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. Temperature कम होता जाता है. पहाड़ों पे आप गए होंगे, you might have seen that when you go in the hilly region, how the temperature changes. बिल्कुल से एकदम गर्मी से एकदम ठंड हो जाती है. Okay, so it influences the hills are therefore cooler during the summers. Summer season में क्या होता है कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंड होती है. People run, हाँ, शहरों से people go, they run to the hilly areas. किसी तरह से they go and take a refuge in the hilly areas. Okay? तो pressure and wind system that is there, any area, कहीं पे भी, it depends on latitude and altitude of the place. How the latitude affects and how the altitude of a place affects, ये हम लोग देखेंगे. Pressure system and wind system. What are these atmospheric pressure conditions and what are its effect on the climatic conditions? We will be discussing it in detail. After that, we will be talking about the temperature and rainfall pattern. किस तरह का temperature exist है and what is the rainfall pattern? बारिश कितनी हो रही है? Okay, तो sea, जो समुद्र है, sea exerts a moderating influence on climate. समुद्र का बहुत इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे, क्योंकि मैक्सिमम तो समुद्र है. On this earth, in this world, okay, on this earth, maximum water is there, so it will be having lot of effect. Distance from the sea, it will be having. So the people experience extreme weather conditions because of the moderating influence of sea. Sea का जो effect है, sea का the temperature and the climatic controls, climatic conditions depend on the place which is situated near the sea or which is situated far off. Ocean currents are there. ठीक है?
ओशन करेंट्स आर देयर, जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, द ऑन शोर, बिल्कुल किनारे पे, द ऑन द शोर, द सिटीज दैट आर देयर ऑन द शोर, winds affect the climate of the coastal areas. वहां पे जो हवा चलती है, ओशन करंट्स दैट आर देयर, उसके वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस पे इफेक्ट पड़ता है. जैसे एनी कोस्टल एरिया, कोई भी कोस्टल एरिया है, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, वहां से जो हवा जा रही है विल बी वार्म्ड और कूल्ड, गर्म होगा या ठंडा होगा इफ द विंड्स आर ऑन शोर. हवा अगर बिल्कुल किनारे पे चल रही है तो वार्म करंट से कभी कभी बिल्कुल ठंडी हवा चलती है, एंड ठंडी हवा कहां पे चल रही है, गर्म हवा कहां पे चल रही है, इट हैज एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस नियर द ओशन साइड. ओके, then you have to, and we will be discussing about the relief features. Relief features, इसमें mountain is there, it is barrier for cold and hot winds. Then precipitation, rainfall also highly depends on the relief features. तो अगर रास्ते में कोई mountain है, if there is any hilly area or if there is any mountainous region, तो there is the windward side and the leeward side. The leeward side of mountains remain dry. हाँ, windward side and leeward side, of course, we will be discussing it. Okay, so these are the conditions that control the climate of a place. Got it? And these climatic conditions that are affected, okay, the climatic conditions that are affected, it is because of these points. How? एक एक पॉइंट को हम लोगों को डिस्कस करना है. We will be discussing it in the next class. Got it, children? So some points I will be showing you just now. So students, just now you have just gone through the explanation that I have discussed regarding climate, the factors that are affecting the climate, or the climatic control is in certain aspects. For certain things climatic control is dependent. तो वो climatic control क्या है और वो किस तरह से climate control होता है, we will be talking about that. सबसे पहले हमने जो बात की थी वो थी रेनफॉल. रेनफॉल आज एक मेजर पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट रेनफॉल. कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, क्यों होती है, ये फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन precipitation is in the form of snowfall in the parts of Himalayas, and काफ़ी ठंडक रहती है उधर, and atmospheric pressure that is there, the temperature that is there, how does it get affected, उसमें किस तरह से अफेक्ट आता है, we need to understand that. एनुअल प्रेसिपिटेशन 400 सेंटीमीटर है मेघालय में, एंड लेस देन 10 सेंटीमीटर है लद्दाख में और राजस्थान में. एक जगह इतनी बारिश, एक जगह इतनी कम बारिश है ना. यही फैक्टर्स हैं जो कि हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑल ऑफ द चैप्टर. पूरे जगह पे रेनफॉल होती है जून और सितंबर में. जून से सितंबर के बीच में ऑल ओवर कंट्री रिसीव्स रेनफॉल. एक तो ये था, गॉट इट. लेकिन तमिलनाडु में बारिश अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है, गॉट इट, ये था. अभी अनदर मेजर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द कोस्टल एरियाज. जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है, इट इज द टेम्परेचर कंडीशंस डिफर देयर ऑल्सो. सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर देयर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. इंटीरियर ऑफ द कंट्री आई टोल्ड यू, which is far off from the coastal areas. कोस्टल एरिया से जो एरिया, जो जगह बहुत दूर है, उस जगह की बात कर रहे हैं हम. देन देर इज डिक्रीज इन द रेनफॉल. कहाँ पे, जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में. एंड वैरायटी इज देयर इन लाइव्स ऑफ पीपल, लाइक खाना वो क्या खा रहे हैं, द फूड दैट दे ईट, क्लोथ्स दे वियर. पता है मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं. इट इज़ एज पर द वेदर दैट इज़ देयर,
इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसके हिसाब से। गॉट इट? तो मैंने आपको यही चीज़ बताने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को। देखो यहाँ पे, बिकॉज द टॉपिक सेज इट इज क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। गॉट इट? तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents, relief features कहीं पे पहाड़ है, कहीं नदी है, खाई है, गड्ढा है, all these things are affecting the temperature of a place or climate of a place. Got it? तो ये सारा हमने भी डिटेल में डिस्कस किया है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट. आपको पहले तो मेजर एस्पेक्ट्स बता दिया गया, द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड सिस्टम, एंड अभी इसका क्या फर्क पड़ता है इंडियन एनवायरनमेंट पे. दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. गॉट इट चिल्ड्रन? थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू.